Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on commerce, accounts, finance and management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You'll find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Students, now we'll start the next problem on probability, that is 32. Problem number 32. So far we have completed 31 problems here. A bag contains 3 white and 2 black balls. Bag A contains 3 white and 2 black balls. First bag, A bag. Total number of balls are 3 plus 2, 5. 3 white, 2 black. Bag B contains 2 white and 4 black balls. One of the bags is chosen at random and a ball is drawn from it. Find the probability that the ball is a white ball. Two bags are there, bag A, bag B. In bag A we have 3 white plus 2 black, or bag B we have 2 white and 4 black balls. Now randomly one of the bag is chosen, either A or B, we don't know. Any one of the bag is chosen at random and a ball is drawn from that bag. What is the probability that the ball drawn from that bag is a white ball? Is a white ball. तो पहले बैग कौन सा आएगा नहीं मालूम, बैग ए बैग बी कौन सा भी बैग आ सकता, तो there is 50% chance of bag A and 50% chance of bag B. तो probability of bag A is half, probability of bag B is half. Secondly, we want a white ball from the bag. White ball from the bag. Now see, bag A. First we'll write down the information of bag A. Total number of balls 5. Number of ways in which one ball can be drawn is 5C1. So out of 5 balls, we are drawing one ball. We are drawing one ball. So how many ways we can draw one ball? 5 ways. 5 balls are there, 5 ways we can draw. Now, number of white balls, 3. In bag A, we have 3 white balls and we want 1 white ball. So how many ways we can draw one white ball out of 3? 3C1 is equal to 3 ways. The probability of drawing a white ball from the bag A is 3C1 by 5C1. Or in simple words, we can say total number of balls in the bag is 5. And how many white balls we are having? 3. Number of favorable cases are 3. The probability of drawing a white ball from bag A is 3 by 5. A probability of white ball from bag A. Now we'll find out, similarly we find out what is the probability of drawing a white ball from bag B. So bag B, total number of balls 6. So how many ways we can select a ball from 6 balls? 6C1. Total number of ways are 6 ways. Now number of white balls are 2. So what is, how many ways we can draw one white ball out of 2? 2C1. 2C1, that is 2 ways. यानी 2 white ball में से 1 white ball निकालना है, तो 2 ways are there. So number of favorable cases are 2. Total number of outcomes are 6. So 2 by 6. Or if we simplify, it will be 1 by 3. So 1 by 3 is the probability of drawing a white ball from bag B. And 3 by 5 is the probability of drawing a white ball from bag A. अब कौन सा बैग चूज करेंगे ये नहीं पता, तो probability of drawing bag A और bag B is 1 by 2. बैग ए के आने के चांसेस हाफ है, बैग बी आने के चांसेस हाफ है. Probability of selecting a bag is 1 by 2. Therefore, probability of selecting a white ball is 1 by 2 into 3 by 5 plus 1 by 3. ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि फर्स्ट केस हुआ तो सेकंड नहीं होगा, सेकंड हुआ तो फर्स्ट नहीं होगा. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ दिस केस? एड अप द प्रोबेबिलिटी. सो 3 by 5 दिस वन प्लस 1 by 3 दिस वन into half. तो हाफ को ब्रैकेट के बाहर रख दो. पहले इसका एलसीएम ले लो. 5 into 3, 5 3 is 15. 5 how many times cuts 15? 3 times. 3 into 3, 3 3 is 9. 3 how many times cuts 15? 5 times. 5 1s are 5. तो 9 plus 5 is 14. तो 14 by 15. तो 1 by 2 into 14 by 15. तो 1 into 14, 14, 2 into 15, 30. तो 14 by 30 और 2 7s are 14, 2 15 times, 7 by 15.
तो probability of drawing a white ball from the bag is 7/15. This is problem number 32. Now see the 33. Problem number 33, you see. A bag contains 5 red and 4 black balls. So total number of balls are 9. A ball is drawn at random from bag and put it in another bag which contains 3 red and 7 black balls. So 2 bags are there. Pahela first bag. In A bag we are having 5 red and 4 black balls. So totally 9 balls we are having in A bag. Randomly we are picking a ball from first bag and putting that ball in the second bag. In the second bag we already have 3 red and 7 black balls. A ball is randomly drawn from the second bag. What is the probability that it is red? Try to understand. Suppose A bag or B bag है. First bag A है, second bag B है. First bag में से first of all we are drawing a ball from the A bag, first bag, and putting that ball in the second bag. एक बॉल पहले बैग ए में से निकाल रहे हैं और बी बैग में डाल रहे हैं. डालने के बाद सेकेंड टाइम वी आर ड्रॉइंग ए बॉल फ्रॉम बैग बी. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग इज अ रेड बॉल, इज ए रेड बॉल. तो पहले रैंडमली एक बॉल निकालकर ए बैग से बी बैग में डाल रहे हैं. तो कौन सा भी बॉल हो सकता हूं. फर्स्ट ड्रॉ में ए से निकालकर बी में डालने के टाइम पर या तो वो बॉल रेड हो सकता या वो बॉल ब्लैक, क्योंकि 2 कलर्स के बॉल से फर्स्ट ड्रॉ जब कर रहे हैं ए से निकालकर बी में डाल रहे हैं तो कोई भी बॉल हो सकता है, या तो रेड या ब्लैक. अब ये डालने के बाद फिर सेकंड बी बैग में से एक बॉल ड्रॉ निकाल रहे हैं, वो बॉल हमको रेड चाहिए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग? दैट इज द क्वेश्चन, राइट? नाउ सी first bag. In the first bag we have 5 red, 4 black, total 9 balls. Second bag we have 3 red, 7 black, 10 balls. Ye first bag. A ball is drawn from first bag and put it in the second bag. Now it is what is the probability that the ball drawn from the second bag is red? ये पूरा क्वेश्चन हो गया है. प्रॉब्लम यही है कि पहले एक बॉल फर्स्ट बैग में से निकाल रहे, सेकंड बैग में डाल दे रहे, फिर उसके बाद सेकंड बैग में से एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस ड्रॉ इज ए रेड बॉल? द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग मे बी रेड और ब्लैक. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ड्रॉइंग ए बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग. फर्स्ट बैग से जो बॉल निकाल रहे हैं वो ब्लैक भी हो सकता, रेड भी हो सकता. तो पहले मालूम करेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग. पहले एज्यूम करेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग. तो हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर इन द फर्स्ट बैग? 5. हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज देयर? 9. तो 5/9 is the probability. 5/9 is the probability of drawing a red ball from the first bag. Now second bag will have. अब एक बॉल फर्स्ट बैग से निकालकर सेकंड बैग में डाल दे रहे हैं. सेकंड बैग में पहले से रेड कितने हैं? पहले से 3 रेड है और एक रेड आ गया तो 4 रेड. नाउ सेकंड बैग विल हैव 4 रेड. पहले 3 रेड थे, अभी एक रेड और एक आ गया, फर्स्ट बैग से आ गया. तो 4 रेड 7 ब्लैक बॉल्स. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द सेकंड बैग नाउ इट विल बी 11. पहले 10 थे, अब 11 हो गए. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग. अब सेकंड बैग में से रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाउ मेनी रेड बैग्स वी हैव? रेड बॉल्स वी हैव 4. हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स? 11. तो 4/11 इज द प्रोबेबिलिटी. 4/11 is the probability of drawing a red ball from the second bag. Therefore, probability of drawing red ball from first bag and again red ball from second bag. अब ये अल्टीमेटली मालूम करना है कि what is the ultimate probability of drawing a red ball from the first bag and again drawing a red ball from the second bag. पहले बैग में से एक बॉल निकाल रहे हैं और वो हैपन हो गया रेड, और वो रेड बॉल को हम सेकंड बैग में डाल दिया, डालकर फिर सेकंड बैग में से ड्रॉ कर रहे हैं रेड. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? मल्टीप्लाई बोथ द प्रोबेबिलिटीज. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग? 5/9. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग? 4/11. 5/9 into 4/11, 20/99. तो 29/99 ये केस 1 है. केस 1 कब का है? जब पहले बैग में से रेड बॉल निकालना. क्या जरूरी है क्या रेड बॉल होना? क्योंकि रैंडमली हम निकाल रहे हैं. क्लोजिंग आवर आईज वी आर ड्रॉइंग ए बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग.
तो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट द फर्स्ट बॉल विल बी रेड बॉल, फर्स्ट बॉल ब्लैक भी हो सकता। तो केस 2 में लेंगे कि सपोज अगर पहला बॉल हम बैग ए में फर्स्ट में से निकाले, वो बॉल ब्लैक निकल गया तो क्या हो, केस 2, ये भी पॉसिबिलिटी है। नाउ probability of black ball from first bag, how many black balls are there in the first bag? 4. Total number of balls 9. 4 by 9. 4 by 9 is the probability of drawing a black ball from the first bag. Now second bag will have, अब second bag में एक black बढ़ गया, पहले कितने black थे ओरिजिनली? 7 black थे, अब एक black आ गया फर्स्ट बैग में से, तो 8 black हो गए। तो 3 red plus 8 black, 3 red plus 8 black, 11 balls हो। तो what is the probability of drawing a red ball from this second bag? तो how many red balls? 3. Total number of balls 11. तो 3 by 11 is the probability of drawing a red ball from the second bag. Probability of drawing red from the second bag 3 by 11. Therefore probability of drawing black from first bag and red from second bag. अब ये केस 2 है। What is the probability of drawing a black ball from the first bag? 4 by 9. What is the probability of drawing a red ball from the second bag? 3 by 11. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 by 9 into 3 by 11. It is 12 by 91. ये केस 2, ये केस 1 हो गया था। केस 1 क्या हुआ, पहले बैग में से रेड निकाले, दूसरे बैग में से भी रेड आ गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी? अब सेकंड, पहले बैग में से जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो ब्लैक आ गया, और सेकंड बॉल सेकंड विड्रॉ कर रहे हैं तो रेड आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 12 by 90. The two events 1 and 2 are mutually exclusive, so the required one. ये दोनों mutually exclusive, क्योंकि A केस अगर होगा तो ये नहीं होगा, B केस अगर होगा तो A नहीं होगा, mutually exclusive. So दोनों में से कोई एक केस होने की probability क्या है? तो दोनों को ऐड कर लेंगे, P of A और B is equal to P of A plus P of B if the events are mutually exclusive. या mutually exclusive event है, दोनों probability को ऐड कर दो। तो 20 by 99 plus 12 by 99, 20 by 99 plus 12 by 99 is 32 by 99. So 32 by 99 is the probability that one ball is drawn from first bag to second bag and then drawing a red ball from the second bag. The probability is 32 by 99. Now we'll come to the next problem, 34th. See the 34th. The probability that an event A happens in one trial of an experiment is 0.4. Probability that an event happens, एक event होने की probability 0.4 है, तो नहीं होने की probability 0.6. 1 minus 0.4, 0.6. The 3 independent trials of the experiment are performed. Find the probability that event A happens at least once. 3 ट्रायल कर रहे हैं, तो एक एवरी टाइम ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हैपनिंग इज 0.4, नॉट हैपनिंग इज 0.6. सपोज 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स आर कंडक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट हैपेंस एटलीस्ट वंस? वो 3 ट्रायल में से इवेंट ए हैपन होना कम से कम एक बार, कम से कम एटलीस्ट वन टाइम। तो इसको कैसा मालूम करेंगे? फर्स्ट वी फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट इन ऑल द थ्री ट्रायल्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट डज नॉट हैपन इन ऑल द 3 ट्रायल? फर्स्ट ट्रायल में भी नहीं होना, सेकंड ट्रायल में भी नहीं होना, थर्ड ट्रायल में भी नहीं होना. Then we can calculate what is the probability that at least once the event happens. Now see, P of A, probability of happening of an event 0.4 given in the problem. P of A bar, probability of not happening of the event 1 minus 0.4 is 0.6. तो understood है? अगर happening होने की 0.4 है तो not happening की 0.6 है. तो probability that the event does not happen in the first trial, second trial and third trial. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवेंट फर्स्ट ट्रायल में भी नहीं होना, सेकेंड ट्रायल में भी नहीं होना, थर्ड ट्रायल में भी नहीं होना? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट डज नॉट हैपन इन द फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल एंड थर्ड ट्रायल? दैट इज पी ऑफ ए बार इनटू पी ऑफ ए बार इनटू पी ऑफ ए बार. ए बार का मतलब नॉट हैपनिंग, P of A bar 1 into P of A bar 2 into P of A bar 3. तो 0.6 into 0.6 into 0.6, 0.216. So 0.216 is the probability that the event does not happen in the first trial, in the second trial, in the third trial. होना ही नहीं, तो 0.2. Now what is the probability of A event happens at least once?
प्रॉब्लम में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट हैपेंस एटलीस्ट वंस इन द 3 ट्रायल्स। वो 3 ट्रायल में से कम एक बार होना, मिनिमम 1, एटलीस्ट वंस। तो कैसे मालूम करेंगे? 1 माइनस probability of not happening the event at all in all the 3 trials. 1 minus probability of not happening the event in all the 3 times. So what is the probability of not happening the event in all the 3 times? 0.216. ये नहीं होने के चांसेस है, तो एटलीस्ट 1 होने के चांसेस है। 1 minus 0.216 is 0.784. So 0.784 is the probability that the event happens at least once in the 3 trials. 3 में से कम एक बार होना, 0.784. That's it. Now 35. Problem number 35. 3 fair coins are tossed. Fair coins means genuine coins, in which when you toss the coin, you will get head or tail equal likely. So 3 fair coins are tossed. Find the probability of at least 1 head, exactly 1 tail. So 2 different questions are there. The first question, at least 1 head, and second, exactly 1 tail. So how many coins are tossed? 3 fair coins are tossed. Probability of getting head is 1 by 2. P of A 1 by 2. P of A bar. A bar का मतलब contradictory, contrary event. तो A P of A 1 by 2 है, तो P of A bar probability of not getting the head 1 by 2. Not getting the head का मतलब getting the tail, क्योंकि 2 ही events हैं, head और tail. तो head होने के chances 1 by 2 है, तो tail होने के chances भी 1 by 2. Probability no head in the first, second, third trial. The probability of no head का मतलब tail. Tail in the first trial, tail in the second trial, tail in the third trial, because every trial is independent. No, not related with the previous trial. तो यहाँ पर 1 by 2 probability of tail in the first trial 1 by 2, probability of tail in the second trial, probability of tail in the third trial. So 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2, 1 by 8 is the probability of getting tails in all the 3 trials. But it is asking you what is the probability of getting at least 1 head. At least 1 head, just like the previous problem. So probability of at least 1 head is equal to 1 minus probability of no head. No head का मतलब all tails. So what is the probability of all tails? 1 by 8. So 1 minus 1 by 8. 1 minus 1 by 8, you will get 7 by 8. 8 minus 1 क्या हो गया? 7. 7 by 8. So 7 by 8 is the probability of getting at least 1 head in the 3 trials. First question completed. Probability of getting exactly 1 tail. Exactly 1 tail in the 3 trials. 3 trial में exactly 1 tail आने की probability क्या है? तो first of all, total number of outcomes. एक outcome में 3 है, 2 trials हैं, 2 events हैं. In every trial there are 2 events, head or tail, head or tail, head or tail. So total number of events are 8. 2 into 2 into 2, 2 twos are 4, 4 twos are 8. So total number of outcomes in the 3 trials is 8. अब 8 में हमको टेल चाहिए. टेल कितने बार है? 3 टाइम्स. फर्स्ट ट्रायल में 1 टेल है, सेकेंड ट्रायल में 1 टेल है, थर्ड ट्रायल में 1 टेल है. तो 3 टेल्स आर देयर, आउट ऑफ विच वी वांट एग्जैक्टली 1. एग्जैक्टली 1. तो आउट ऑफ 3 टेल्स वी वांट एग्जैक्टली 1. तो 3C1. तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आर 3. Number of favorable cases are 3C1 and total number of outcomes are 8C1. So this probability of exactly 1 tail is 3C1 divided by 8C1. So 3 by 8 is the probability of getting exactly 1 tail in the 3 trials. That's it. Now 36th problem. Problem number 36. A coin is tossed 3 times in succession, one after the other. What is the probability of tosses coming in the order? First question, head, tail, head. Second, head, head, head. Third, 2 heads and 1 tail. So 3 times. A coin is tossed 3 times. First time, second time, third time. 3 times coin is tossed. When you throw the coin, the probability of getting head is 1 by 2. Probability of not getting head, getting tail is 1 by 2. Now, in the 3 times,
we want first time head, second time head, third time head. First one, first time head, second time tail, third time head. Probability of getting head, H 1 by 2. Probability of getting tail, T 1 by 2. A question, probability of getting head, tail, head. यानी पहले ट्रायल में फर्स्ट टाइम जब थ्रो करेंगे तो हेड आना, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 2. सेकेंड टाइम जब थ्रो करेंगे तो टेल आना, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 by 2. थर्ड टाइम पे जब थ्रो करेंगे तो हेड आना, दैट इज ऑल्सो 1 by 2. तो 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2, 1 by 8. 1 by 8 is the probability of getting head, tail, head in this sequence. Now second question, probability of getting head, head, head. तो क्या प्रोबेबिलिटी है, पहली बार थ्रो करेंगे हेड आएगा, दूसरी बार भी हेड आना, तीसरी बार भी हेड आना. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? 1 by 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 by 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 by 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 by 2, अगेन 1 by 8. 1 by 8 is the probability of getting head, head, head. Third case, probability of getting 2 heads and 1 tail. Probability of getting 2 heads and 1 tail. तो total number of outcomes are 8. जब 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो total number of outcomes are 8. 2 plus 2 plus 2. Right? 2 into 2 into 2. Sorry. 2 into 2 into 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8. 2 heads out of 3. 3 times we may get. Maximum possible outcomes are 3. जब 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो 3 बार टेल आ सकता, 3 बार हेड आ सकता. 3 times we may get head. But we need 2 times head. We need 2 times head and 1 tail. So 2 heads out of 3 can be obtained in 3C2 ways. 3C2 ways. The required probability is 3 by 8. 2 heads and 1 tails. 2 heads out of 3 can be obtained in 3C1 ways. Not 3C2. 3C1 ways. Because 3 heads we are having totally, out of which we want 2. So 1 tail. So 3C1. So 3 by 8 is the required probability. That's all. So this is the end of problem number 36.